हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग MVC एप्लीकेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि ASP.NET के थ्रू आप डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करते हो। इस वीडियो में हम टोटली MVC स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। MVC स्ट्रक्चर आई होप सारे लोग अवेयर होंगे किस तरह से वर्क करता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन MVC एप्लीकेशंस। आज के वीडियो में मैं डेडिकेटली आपको डेटाबेस इंटरेक्शन बताऊंगा, यानी कि ऑल पॉसिबल CRUD ऑपरेशन जो जनरली हम परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटाबेस में थ्रू दी MVC एप्लीकेशन। तो क्रिएट, एडिट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, तो उसको हम MVC स्ट्रक्चर के थ्रू फॉलो करेंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो लेट मी क्रिएट वन प्रोजेक्ट। यहाँ से ASP.NET फ्रेमवर्क लेते हैं, गो फॉर द MVC MVC CRUD. So that is the application name. Create, and I will go for the empty one because अगर आप MVC लेते हो तो by default layout templates, all the required fields folders are created, but MVT लेते हैं so that आप लोग थोड़ा सा familiar हो जाए कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से फाइल्स हमें मैनुअली बनाने पड़ते हैं। So that why हम empty लेंगे, and then in the left section we have to select MVC and then create. So now our project is going to be create. So ये already create हो गया है. This is the MVC structure. So MVC is nothing, it's just a design patterns for developing a web applications. So design patterns, it means there is a certain rules and regulation that you have to be follow whenever you are developing or developing any website. So if you follow MVC patterns, that means you have to follow certain rule and regulation, then you will be able to develop a website. सो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट इन MVC? अगर मैं फर्दर आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं तो मेन कंपोनेंट इसमें आपका होता है कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू। सो दिस थ्री कंपोनेंट्स मेनरली डिफाइन उसने किया है कि भाई देखो, इसी थ्री मेन मेजर कंपोनेंट्स के थ्रू आप किसी भी व्यू के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो कंट्रोलर इज द मेन कंट्रोलर पार्ट हु कंट्रोल्स व्यू एंड मॉडल्स. View is a particularly for UI representation, and model is for generally contain all the required properties and data for that purpose. सो फॉर इसी पैटर्न्स को यूज करके हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। ओके, फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट क्रिएट वन मोर कंट्रोलर ताकि हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट राइट क्लिक, ऐड, एंड हियर यू हैव टू क्लिक कंट्रोलर, और कंट्रोलर में यहाँ लेते हैं रीड राइट ऑपरेशन एक्शन के साथ, सो दैट बाय डिफॉल्ट एडिट, अपडेट, डिलीट के एक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। नाउ वी हैव टू क्रिएट, प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंट्रोलर, EMP. Suppose we are going to create the employee controller, so just add employee controller, और employee controller पे हम जनरली वो सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो देखिए एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऑलमोस्ट सारे एक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विच इज़ अ गेट टाइप। दूसरा आपका डिटेल्स है विच इज़ अ गेट टाइप। इट इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉय का अगर डिटेल्स फैच करना है, फॉर दैट पर्पस क्रिएट फॉर द क्रिएटिंग एन एम्प्लॉय और एडिंग अ न्यू एम्प्लॉय, दिस इज फॉर क्रिएट फॉर add, perform a logic to insert data into that database. So here in the post method we have to perform the request, perform and write the logic related to that. Edit for editing purpose and delete for deleting purpose. So this is the default created actions. Now I'm going to be create the view based on the our requirements. So first of all in the index page मैं क्या चाहता हूँ कि इंडेक्स पेज ओपन हो तो सारे नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज जो एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में, दैट नीड टू बी फैच्ड। तो वो हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू, नॉट द जेनरिक व्यू। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एंड फॉर दैट मॉडल वी हैव टू क्रिएट वन क्लास एम्प्लॉय मॉडल। Okay, so that is employee model, add. So now employee model is created. Now simply you have to create property. The first name of property is
employee ID, second properties string, employee name, next properties a string, employee email, another properties employee salary, and salaries of type double, so इसको double रखते हैं. Now public, or we can say type property, here we have to put a string and department. So departments, so these are the model of that employee, so we have created. Now based on that model I'm going to design our view. So that first view is for displaying all the employees which is exist in our database. So अभी तो हमारे कोई भी यूज़र या कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं होगा. सो बट हम व्यू पहले बनाते हैं, सो दैट वी हैव टू ऐड द लॉजिक फॉर दैट. सो इंडेक्स पे राइट क्लिक करते हैं. इन द एम्बेसी स्ट्रक्चर व्हाट एवर द एक्शंस डिक्लेयर इन योर कंट्रोलर, उसके बेसिस पे आपको व्यू बनाने पड़ते हैं. सो आप इंडेक्स के लिए व्यू बना रहे हो तो यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एक्शन एंड देन यू हैव टू क्रिएट ऐड व्यू. दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा. ओके, मैनुअली आपको मैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड बेस्ड ऑन दैट कंट्रोलर एक्शन दे विल क्रिएट अ व्यू फोल्डर स्ट्रक्चर. सो दिस इज द व्यू ऑप्शन, ऐड, and here you have to provide the view name. For now you have to make it remember that the view name and the action name should be same for now, but there is a concept we can change the view name as well, the action name as well. Each and everything is possible. For now, for the beginners point of view, I just kept as it is. Now the template is list type because I'm going to display all the employees here in that action. Employee, which type of data we want to display, the employee kind of a data, so they have to select the model. And the script is default, layout is also default, we are not going to design any layout. So that is created. Okay, but there is a one issue in this view that we need to be take care of that. So once that index page get accessed by the end user, they are trying to fetch all the records from the model through that for each loop and displaying the value. But if that data doesn't have anything in that table, in that case it will throw the exceptions, not the reference exception, because that model doesn't have any record, right, at first time. सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं. तो हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली यू हैव टू चेक द नल. सो मॉडल नॉट इक्वल्स टू नल, देन इट विल गोज टू दैट लूप. सो दैट कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया. दैट इज द बेसिक थिंग, ताकि वो नल रेफरेंस एक्सेप्शन आए, राइट. नाउ that is also uncommented because we required those information, id. So what information we need, employee id. In details also we need employee id, and for delete also we need employee id. So both the case we need employee id. Okay, now that view, and you can see the view structure, that is employee, because this is the employee controller, so that it will create an employee folder. Inside that there is a index page, so that separation is almost perfect, right, in MVC structure. Now go to that action and controller and go to that action details. Now we have to add the details page. So MVC view, add, and here you have to choose the details template, model should be employee, add. So that details model is added, right? And here we have to pass the id, because based on that employee id
we will apply, edit, update, and delete operation. So that option need to be enabled. Some of the version it will automatically there, but if that part is commented out, you just uncomment it and provide the relevant property in it, so that it will work. Next, go to that create one. So here you can see the create, add view. We need a create so that we are able to add the employees. So that create templates, how the design of the view will be based on the model, add. So that is a create. That is almost perfect, there is no issue. Now go for controller again. This is the post, because we are creating a strongly type view, so we are not getting data from the form collection, we are directly getting data from the model. So our model name is employee model. That's it. So employee. Okay. Now edit, what we can do, add, edit, view, add, template is edit. Here we can choose employee model and edit. That edit is created. Let me check the other thing, that is fine. Now go to that controller. This is the post one. In the post one also we required our model, so employee model, and we required one more parameter, that is id, that is employee id. Now go to that for delete, add view. Now I'm adding a functionality of delete. So this is the get request of delete. So this page is designed based on the model. So get designed. See, everything is got created automatically. Now go to that post. So post is id and the property we got from our employee model. So that is employee model. That's it. So almost all views and action, default action is created, view is created based on our model. All the employees functionality CRUD operations is created here. Now what we can do, we have to create one table. So go to that database. So this is the table query. Okay, and that table is already there. If you want to create the table, just simply run this query. The table is already created, it will create it automatically, and then you will see what are the columns available there. See that columns are there. Let me check if is there in the data or not. Let me connect. So you have to use your database, then select query. Yeah, one record is there, so that is fine, no issue. Okay, now what we can do, we have to implement the code and database connectivity. For that we need to go to that configurations. I want to add the database connectivity thing into the configuration, because that configuration is a pre-compiled file, and if we put the connection string in this file, in future we are efficiently update the details without compiling or recompiling the uh, applications, so without modifying the applications. For that purpose we need to add the connection string kind of a things in a configuration file. So there is a property called name, and here you can provide db connection, and here is the connection string. Then go for the provider name. Provider name is system dot data dot sql client. That's it. And from where we get the connection string, so in a Visual Studio there is a privileged, there is an option, server explorer. In that server explorer you have to click on add connections. Then they will ask for the server name. Go to that SQL server, just copy your server name and just put the server name. Choose the authentication mechanism by which you are already connected with your SQL server. As you can see, we are connected with SQL authentication. So same you have to select here also, and then find your database. This is our database. Click on test connection, succeeded, fine.
Everything is goes fine. Just right click on that property, and here is the connection string. So simply select, copy, and paste. That's it. So this is not a mandatory process to get the connection string through the by this process. If you remember this syntax, simply you have to write manually. That is also fine. There is no issue with that. But make sure that the syntax and the keywords need to be as it is. Okay. Now the connection string we have established. Now what we can do, uh, we have to create some separation for the connectivity as well. So for that, what we can do, we have to create one folder which is called repo, and one another folder which is called service. Now in this service folder, I'm going to add one class, employee service, and in repo I'm going to add one more class, is called employee repo. So why we are creating these two classes? Because I want to separate the uh, logic, business logic, and the database connectivity logic in the two different sections. So that repository is basically responsible for the all the database queries related logic, and that service is basically responsible to grab all the details and calling the methods of that repo and provide it to controller. For that purpose, that service is introduced. So now in the repo class, what we can do, we have to use few of the package, because in this MVC applications we are connecting through the we are connecting database, SQL database, through the ADO.NET package. So for that we have to use the namespace of that package. So that is system dot data dot SQL client. Then we are getting the connection string from the configuration. So for that we have to use system dot configuration. Now now we have to create the private, read only SQL connection con. So this is the reference type of that connection, private read only SQL command cmd. So this is another. Now create the constructor. So this is the constructor. In this constructor, we are going to initialize the SQL connection, and in that connection, we are going to provide the connection string. So for that connection string, we have a configuration manager, and that configuration manager having a collection of connection string, and they will ask for one of the collection, which is a name of our connection. So this is our name of the collection, connection string, then connection string. That's it. The connection string path is we have provided to SQL command. Now I'm going to initialize the SQL command, and cmd also we have to provide the connection of that cmd. तो connection provide कर दिया cmd को. So that two operations, two functionality we have done in a constructor. इस कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीज़ कर दिया, एक तो कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर दिया और कमांड को इनिशियलाइज कर दिया और कमांड को कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया. अब कमांड को मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेरी देनी है. So now we are going to create one more method which is a list type, and employee model type होगा ये get all employee, क्योंकि पहला जो मेरा ऑपरेशन है वो सारे एम्प्लॉय गेट करने का, गेट ऑल एम्प्लॉय. Okay, so here what we can do, try catch and just write through. That's it. And here what we can do, we just create list. Which type of list? Employee model type of list. MP equals to new list model,
And here what we can do, we have just con dot open, connection is open now command dot command text. So क्या query चलेगा, query चलेगा select star from employees. So this is the query, but a star is not a good standard coding practice, so you have to go with always the specific parameter, a specific columns, not parameter, a specific column instead of a star, because in future maybe a table has multiple new row introduced. In that case it will be not a good practice to call a star, right? So for that point of view we have to go with the specific selection of the column. Now cmd dot have to read the whatever the command get executed. For that we have to use reader execute non query. So this command get executed. Now while dot read, and here we have to create the employee model, and in this model what are the values? The values is employee id. From where we get the employee id? That reader will provide that, right? So that reader, not reduce, reader, what the hell, reader. And now we have to provide the column name. The column name is employee underscore id dot to a string. Still this is giving an error because that employee id is a integer type, so we have to convert dot to int 32. So now it will not give error. So this is the first parameter. The second parameter is email, and syntax is almost same. This is the syntax, only the column name need to be changed. The next one is employee department. Syntax is almost same. Simply copy, paste, change the column name. The next one is employee name. Syntax is same, just scrapping the same thing. Employee name column. Just you have to change this one. Now salary in double, right? So we have to grab this one because we need to convert that string to double. So इसके लिए हमें चाहिए कि इसको हम डबल में कन्वर्ट करें. So for that we need to use to double. Okay, so now it got converted. So now employee imp के पास अब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है क्योंकि लूप चल रहा है. नाउ जितने रिकॉर्ड्स, जितने रोज उसमें अवेलेबल होंगे, सारे रोज के डेटा हम लेंगे एंड इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे. नाउ द लिस्ट हैव ऑल द रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस से आया है हमारे पास. मोर देन वन रो इट मे बी पॉसिबल. So now we are going to return those data into it to this method return list. That's it. And let me introduce the finally one as well, because we are establishing the SQL connection, so that connection need to be closed every time. That need to be remember always, because this connection object never destroyed by the GC. That is a garbage collector. You have to manually dispose all the instantiation. So that first method is get created. Now the second method हमारा क्या है? एम्प्लॉय तो गेट कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक एम्प्लॉय, दैट मीन्स बाय आईडी. सो दैट आईडी नीड टू बी पास्ड. एंड जब आईडी की बात करेंगे तो फिर लिस्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा हमारे पास अल्टीमेटली, राइट? सो नो नीड फॉर लिस्ट. so ये लिस्ट हटा दिया एंड here we have to pass all the employee, and here we have to apply the where condition. Employees where
underscore id equals to @empid. So this is our parameter. So now SQL reader will read the data, but now that parameter need to be passed, which is the employee id, right? That need to be passed. That is mandatory. So what we can do, uh, simply have to write cmd dot parameters dot add with value, and here you can decide what are the parameters required. So our parameter name is empid. So simply you have to provide empid with @ and what are the value that need to be passed, which is id. ये id आ कहाँ से रहा है, पैरामीटर से आ रहा है. ओके, सो नाउ पैरामीटर ऑलरेडी हमने दे दिया है, रीडर ने रीड किया, डेटा फैच किया, और ये लिस्ट को देने की जरूरत नहीं है, नो नीड. और यहाँ पे हमें इंस्टेंस भी बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली डेटा जो है गेट कर सकते हैं क्योंकि इंस्टेंस ऑलरेडी ऊपर बने हुआ है. सिंपली वी हैव टू यूज द emp नेम, यानी कि दैट इज ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे आप सिंपली ऑब्जेक्ट नेम से सारे इंस्टेंस, सारे प्रॉपर्टीज को कॉल करो. लेट मी रिमूव द कॉमा, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेमीकोलन. That the second method is ready, which is responsible to getting the record from the database by id, and here we have to return imp. So this is the second. Now the third one is related to create or add employee, right? So employee add करने के लिए क्या चाहिए, हमें employee model चाहिए, that is mandatory. So no need for this. Instead of this, what query need to be passed, यहाँ पे जाएगा insert into employees, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं वो सारे स्पेसिफिक कॉलम्स जो हमें चाहिए इंसर्ट करने के लिए. आईडी ऑटो जनरेटेड है डेटाबेस के अंदर, सो आईडी हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे क्वेरी हो जाएगा वैल्यूज, एंड हेयर वी हैव टू ऐड ऑल द डेटा पैरामीटर. तो पैरामीटर हमारा क्या होगा, द पहला पैरामीटर @emp नेम, कॉमा @emp email, next @emp salary, @emp department, department is the last parameter. Okay, so ये पैरामीटर मैंने बना दिया. Now need to write the same parameter value with the same syntax. So first is emp name, so that is the first parameter, emp name. The second one is emp email, the third one is emp salary, the fourth one क्या है हमारा, emp department. And from where we get the value of all those parameters, तो ये हमें मिलेगा employee model से. तो employee model dot employee का name चाहिए, employee name. Now just copy, paste, paste, paste. Next is employee email, next one is employee salary, and the next one is employee department. So let me find employee. Okay, id is included here. So employee dot employee department. So that all parameter हमने ऐड कर दिया. अब यहाँ एग्जीक्यूट रीडर नहीं करना क्योंकि ये इंसर्ट हो रहा है, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं इंट रिजल्ट, और इस रिजल्ट को
हम फैच स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूट रीडर चलेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, राइट, क्योंकि डेटा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है. सो दैट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इज अ परफेक्ट मेथड. नो नीड टू परफॉर्म रीड एंड राइट. इंसर्ट नॉन क्वेरी अगर मुझे रिटर्न करता है is greater than 0, that means row get impacted. row यानी इंसर्ट हुआ है, अगर इंसर्ट हुआ है तो सिंपली रिटर्न करें रिजल्ट को. दैट्स इट. और रिटर्न टाइप नीड टू बी चेंज विथ integer, or same we have to return in the end as well. So this is for adding employee. ये भी बना दिया. नेक्स्ट क्या बनाते हैं, अपडेट एम्प्लॉय. अपडेट एम्प्लॉय के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो आईडी चाहिए हमें, एंड देन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए. Instead of insert, we have to use update, then the table name, then set, and then employee at the rate emp equals to at the rate emp underscore name. The second is at the rate emp underscore email. Okay, the next one is emp at the rate emp underscore salary. The next one is department equals to at the rate emp underscore ept. But this update will based on the specific id, right? सारे रो तो अपडेट होंगे नहीं, so we have to apply the where condition, where p underscore id equals to at the rate emp underscore id. So all are the scalar variable need to be passed here. So almost ये सारे स्केलर यहाँ पे है, एक नया स्केलर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज अ id1, और ये id हमें मिलेगा इस पैरामीटर से. So we have to supply id. That's it. Other than that, everything is same. So this is for update. Now this is for delete one. Delete employee. And for delete employee, we just need id. That is also enough. Delete from employee, and where we have just need where clause, where employee id equals to this. That's it. Other than that हमें कुछ नहीं चाहिए. Execute non query, result है, delete हो गया. That's it. So delete is also completed. Now move to the service one. So in the service one, what we can do, we have to use almost all the same methods, but what is the difference? Difference पर इतना रहेगा, so that we copy all the methods, go to that employee, and here we have to just paste all the methods. What we need to remove, first of all we need to create, यहाँ पे एक प्राइवेट लेते हैं, रीड ओनली लेते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी लेते हैं, और उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं. यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं, इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिपोर्ट का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उसी के सारे मेथड्स यूज करूँगा, राइट. सो नाउ दिस इज गेट एम्प्लॉय, बट दिस लॉजिक नीड टू बी यहाँ पे नहीं रहेगा. इस लॉजिक के बदले क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सिंपली यू हैव टू डू नथिंग. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको रिटर्न लिखना है, और जो एक्सपेक्टेड है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. दैट्स इट, सिंपल. तो ये मेथड वही रिटर्न करके दे रहा है, लिस्ट ही रिटर्न कर दे रहा है, राइट. नाउ इन दिस मेथड व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भी रिमूव करो. फाइनली इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, this is also not required. Simply return underscore repository dot get employee by id and just pass the id. That's it. इसमें भी हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, no logic, only call the repository method. So just go to underscore employee dot add employee,
एंड एम्प्लॉय मॉडल हमने पास कर दिया, सिंपली रिटर्न, दैट्स इट। अपडेट में भी हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑल द लॉजिक जो कि रिपोजिटरी का है, सर्विस में हम सिर्फ रिपोजिटरी के मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो दिस इज अ beneficial whenever some other logic or other kind of validations need to be implemented, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी हम सिंपली एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज अपडेट एम्प्लॉय। हम लोग कोई डेटा वैलिडेट करना है या कोई एम्प्लॉय आईडी का कोई वैलिडेशन या ईमेल आईडी कुछ वैलिडेट करना है, तो आप यहाँ पे वो एक्स्ट्रा लॉजिक जो है वो बिजनेस लॉजिक वो यहाँ पे लगा सकते हो। सो नाउ रिटर्न एम्प्लॉय। फॉर डिलीट ऑल्सो वी आर जस्ट कॉलिंग underscore return underscore employee repo dot delete employee, that's it. So this is our service method module is also completed. Now to do, go to the controller पे क्या होना चाहिए? So in a action, index action, what we can do, we are just capturing all the informations from the service. So उसको यहाँ पे करते हैं private read only employee service एंड सर्विस। यहाँ हमने क्या बना दिया, उसका रेफरेंस बनाया, एंड इन द कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर में इस एम्प्लॉय सर्विस को हमने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया, सो दैट वी विल एबल टू कॉल ऑल द मेथड्स। इंडेक्स मेथड पे क्या कॉल होने वाला है? सो वी आर जस्ट यूजिंग लिस्ट, व्हाट टाइप्स, एम्प्लॉय मॉडल टाइप का, equals to emp, and it will be service dot get all employee, that's it. And we need to pass this information to here, simple, index page will work. Now details में क्या चाहिए हमें? Similarly same method need to be called, and but instead of list it will return a single employee details, because that id need to be passed, right? So employee by id, and that id need to be passed, and that list need to be returned to view, that's it. For create, this is the get endpoint, but for post, what we can do, we just call employee service dot add employee model pass किया, and we are just capturing the result, and if that result is greater than 0, that means insertion goes successful, and if it is successful then return this, otherwise in the final return create. So this is for add. Similarly we can perform for edit as well, but for edit we are just calling this one, क्योंकि edit के केस में मुझे एक ही एम्प्लॉय की डिटेल मिलेगा, राइट? So we have to use the same logic. For edit post we have to call the same, but the method name is update employee, and here we have to pass the id as well. So id, that two parameter, and we have to return the view end. Okay, so this is for edit. For delete as well we have to call the same method, because delete के केस में भी हम confirmation के लिए जाते हैं, तो उसमें भी मुझे वो डेटा रीड करके देना है, so that's why same method call होगा by id, and for post also we have to call the same thing here also. So employee model, this is the object name, employee model, that's it. So almost all method के operations हमने बना दिए हैं. Let me run this program और फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है. Okay,
नाउ इन राउटर कॉन्फ़िगरेशंस नीड टू चेक कि भाई इसका डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा है। द डिफ़ॉल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है होम, लेकिन हमारे कंट्रोलर में क्या है, एम्प्लॉय है। सो इसको अपडेट कर देते हैं, एम्प्लॉय कर देते हैं। ओके, नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। नाउ इट इज़ रनिंग, सी ऑल द डेटा इट फैच। एक रिकॉर्ड था हमारे टेबल में, जैसे कि हमने चेक किया था, एक रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू ABC, ABC, and then you have to call taste@gmail.com, employee salary, and then department is ID. See, ID is created, employee is created. If you want to edit, simply click and all the informations are there. ये आईडी एम्प्लॉय एडिट होने जा रहा है और ये सारे इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग, नीड टू चेंज द सैलरी, save, the data got updated. See, data updated in the details, simply click, you will see all the details. The format is not correct because we are not applying any template or css, that's why it look like this. इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, बट फंक्शनैलिटी यू हैव टू चेक, फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। सो नाउ अब डिटेल्स देखने के बाद if you click on edit, it will go to that edit section and you can see the same edit page. Go to back to list, and then if you want to delete something, just simply click all the details for the confirmation. This is the confirmation of delete, and hit the delete. Everything goes delete. Okay, so this way we have decided which type of method. Okay, delete functionality is not working, so let me check why it is not working. So let me, and for that verification, what we can do, if any kind of a error or any kind of a action or error is occurred, so in the Visual Studio it's very simple to track down. Simply breakpoint lagao, go to that action, back to list, edit. Suppose you are going to delete this one, so simply hit add. See, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, नल आया, राइट। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 आ गया। सो दैट आईडी इज नल, बट दैट आईडी हैविंग a 3 value, that is fine, we require only that id is enough. Go to this section. Okay, you can see this is the update one. Instead of update we have to call delete. So just update the method name, that is the issue. Okay, let me run it again, and simply hit delete. Let me remove the breakpoint. See, delete is running successfully. Okay, so this is all about the MVC CRUD operation which we have completed. If still you have any doubt, any query, please comment on the comment box. I will try to reply. मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर देना। एंड इससे रिलेटेड और भी फर्दर्स वीडियो में लाऊंगा जो रिलेवेंट होगा, यूज़फुल होगा फॉर ऑल द बिगनर्स जो डॉट नेट प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।